Jain students, today we are starting with your second chapter. That is, the name of the chapter is Polynomials of your NCERT book, and today is the first lecture. So first of all, we'll discuss what are the polynomial is, which is and most of the thing you have done in your lower classes. छोटे classes में आपने 8th 7th में polynomials पढ़ रखा है. So we are starting with the polynomials. So what is a polynomial? Polynomial क्या होता है? Any expression of the form, polynomial को ज़्यादातर हम px से denote करते हैं. Any expression of this form an x raised to power n plus an minus 1 x raised to power n minus 1 plus an minus 2 x raised to power n minus 2 up to so on, that is a1x plus a0. Any expression of this form where an minus 1, an minus 2, an minus a3, a0 are the constants and where x is the variable. In the simple language, when the power of the variables should be a whole number. That is, it should not be negative or in the fraction. Negative or in the fraction, it should not be in the square roots also. So this expression of this form where the powers of the variables should be a whole number. And these are this an is known as the coefficient of x की power n, an minus 1 is the coefficient of x की power n minus 1 and so on. A1 is the coefficient of x, and the last term a0, which does not have the variable, is known as the constant term. Now these individual values are known as the terms of the polynomial separated by plus or minus sign. Separated by plus or minus sign. So this is the definition of the polynomial. In the simple language, any expression of this form or where the powers of the variable should be a whole number. Negative और फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, वो पॉलिनोमियल नहीं होता है. वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ मैं. It is about the variables. The coefficients or the constants can be in the square roots or can have any power, negative power, or the positive fractions or in the square root. But the variables should not be in the square roots or any fraction or negative powers. These individual terms, I've told you, they are known as the terms separated by plus minus sign. Now after that, if all these constant, that is an minus 1, an minus 2 up to an, they all are 0, then in this case px will be a not a0, which is known as the constant polynomial. कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है, उस पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं. जैसे px इज इक्वल टू 3, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. px इज इक्वल टू 0, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जहाँ पर कांस्टेंट 0 है. सो दिस इज द ज़ीरो पॉलिनोमियल. नाउ आफ्टर दैट we have types of polynomial where we have if the polynomial have only one term, केवल एक ही term हो, then it is known as the monomial. If polynomial px have two terms, then it is known as the binomial. If it has three terms, then it is known as trinomial. and so on. If it is have 4 or more than 4,
तो we generally call it a polynomial. So binomial, monomial, trinomial based on the number of terms. कितनी terms है polynomial में? अगर केवल एक term है, for example monomial का क्या example होगा? px is equal to x या x square या 2x like this. बायनोमियल का क्या एग्जाम्पल होगा जिसमें आपकी दो टर्म्स होंगी x प्लस 2 या 2x प्लस 2 या 2x क्यूब प्लस 3, केवल दो टर्म. और ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. दिस एग्जाम्पल ऑफ द ट्राइनोमियल विच कंटेन 3 टर्म, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. इसमें 3 टर्म है, इसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं. After that, the types of polynomial based on the degree. Now, what is known as the degree of the polynomial? Degree of the polynomial किसे बोलते हैं? The highest power of the variable is known as the degree of the polynomial. Highest power of the variable is known as the degree of the polynomial. For example, 3x square plus 2x minus 3, its degree is, highest power is 2, so degree is 2. And if it is have 6x raised to power 5 plus 7x minus 9 x की power 4, the highest power is 5, so its degree is 5. Highest, the value of the highest power is known as the degree of the polynomial, and based on the power of the variable, the first type is linear polynomial. Linear polynomial वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, डिग्री 1. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है. क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, एंड सो ऑन. यू हैव टू डू अप टू ओनली 3. बाय क्वाड्रेटिक अगर डिग्री 4 है. सो दिस इज सम बेसिक्स फॉर द polynomials. That what is a polynomial? Binomial, trinomial, monomial and linear, quadratic and cubic polynomial based on the degrees of the polynomial, and monomial, binomial, trinomial based on the number of terms of the polynomial. So this is some basics of this chapter polynomial. We'll start with your first exercise. Open your book. The first exercise is very simple. You can do it very easily. You can do it orally also. 2.1 exercise of your NCERT book. Question number 1. Which of the following expressions are polynomials in one variable? One variables that it have only one variable, either x or y or z or a or whatever it is, and which are not. Give reasons for your answer. Now the first part is 4x square minus 3x plus 7. Yes, it is a polynomial because the powers of the variable are whole number. The power of x is 2 in the first term, the power of x is 1 in the second term, and the last is a constant term. Yes, it is a polynomial because the powers of the variable here are whole number. They are not in the fractions or negative. Second part, yes, it is also a polynomial because the power of y is 2, which is a whole number, and this is the constant term. Constant terms can be in the square root. Constant terms can be in the square root. So yes, it is a polynomial because the power of the variable here is a whole number. Third part, no, it is not a polynomial because the power of the variable where t is the variable here in only one variable, and the power of t is half in the first case. So this is not a square root को, square root t को आप t की power half लिख सकते हैं, and because the power of the variable t here is half, so it is not a polynomial. Now the fourth part, again it is not a polynomial because the second term, which is 2 upon y, you can write as
y रेज टू पावर -1। जब आप वेरिएबल को डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर 1 है यहाँ पर, और जब आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इट बिकम -1 एंड इट इज़ नॉट अ होल नंबर। व्हेन द power of the variable is not a whole number, it is not a polynomial. Fifth part, x raised to power 10, y raised to power 3, t raised to power 5. The power of the variables are whole number, but it is not a polynomial in one variable because it is a polynomial but not in one variable. Polynomial तो है लेकिन one variable में नहीं है. Now, in the second question of this exercise you have to find the coefficient of x square. अभी जब polynomial डिस्कस करे तो मैंने आपको coefficient बताया था. The constant with the variable is known as the coefficient of the variable and you have to find the coefficient of only x square. So in this case it is x square and it means it is 1 x square. So the coefficient of x square here is 1 in the first part. In the second part of this question, coefficient is of x square is -1 because here it is minus x square. So its coefficient is -1. In this, it is coefficient of x square here is pi by 2 because pi by 2 x square and the coefficient of x square is pi by 2. And here we don't have the x square, so the coefficient of x square here is 0. यहाँ पर है ही नहीं x square वाली टर्म, तो उसका coefficient हमारा 0 है. उसका coefficient हमारा क्या है? It is 0. So this is the question number 1 and question number 2 of this exercise 2.1. Now see the question number 3 here. In this, the answer can vary. In the first part, you have to give an example of a binomial of degree 35. Binomial का मतलब है उसमें 2 टर्म होनी चाहिए और डिग्री का मतलब है 35 की हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल आपका 35 होना चाहिए. तो इसका आंसर वेरी कर सकता है. हम ये ले सकते हैं x की पावर 35 प्लस कुछ भी ले लो. बाइनोमियल बनाने के लिए लेट अस कॉल इट 3. ये हो सकता है. डिग्री इसकी 2 टर्म हो गई, दे आर 2 टर्म्स, सो देयरफॉर इट इज़ बाइनोमियल एंड द हाईएस्ट पावर इज़ 35. तो ये डिग्री 35 हो गई. यहाँ पर अभी ऐसे भी आ सकता है x की पावर हम 5 ले लें तो डिग्री तो 35 ही रहेगी. इसमें टर्म 2 हो गई, दे आर 2 टर्म्स, तो बाइनोमियल. तो आंसर कैन वेरी. आंसर इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स हो सकते हैं. एक और एग्जांपल हो सकता है इसका y रेज टू पावर 35 7 प्लस 9y. ये आंसर हो गया. 2 टर्म हो गई, हाईएस्ट पावर 35 हो गई, तो क्या हो गया? बाइनोमियल विद डिग्री 35 हो गया. तो ये आंसर वेरी कर सकता है. नाउ द सेकंड पार्ट, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. तो एक ही टर्म होनी चाहिए और डिग्री 100 का मतलब है हाईएस्ट पावर 100. तो इसका भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर हो सकते हैं. सबसे आसान एग्जांपल x की पावर 100. एक ही टर्म है, डिग्री 100 है. ये हो सकता है, ये हो सकता है. एक ही टर्म है, माइनस भी हो सकता है. तो ये एग्जांपल हो गया मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. ओके. नाउ द फोर्थ पार्ट, यू हैव टू फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. तो डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? x क्यूब x स्क्वायर x. तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर इसकी है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? डिग्री हो गई 3. सेकंड पार्ट में हाईएस्ट पावर इसका है, तो इसकी डिग्री हो गई 2. इसमें हाईएस्ट पावर t का है और t की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई 1. t की पावर 1, दैट इज डिग्री 1. इसमें फोर्थ पार्ट में 3 विच इज कांस्टेंट है और कांस्टेंट का मैंने बताया था डिग्री कितना होता है? डिग्री इज 0. द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट इज 0. द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट इज 0. Now in the fifth part of this exercise you have to classify the following equation as linear, quadratic और cubic. Linear का मतलब आपको पता है केवल एक टर्म. Oh sorry, linear means that polynomial which has a degree 1. Quadratic means the polynomial which have the degree 2 and the cubic is that polynomial which has a degree 3. So this is, see the first part, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है
तो ये आपका क्वाड्रेटिक हो गया। इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्यूबिक हो गया। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो इट इज़ क्वाड्रेटिक हो गया। इसमें हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर हो गया, इस मतलब इसकी डिग्री 1 है। इस वाले पार्ट में 3t है, 3t मीन्स डिग्री 1 तो लीनियर हो गया ये, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। आर स्क्वायर इसकी डिग्री 2 है, मोनोमियल है, डिग्री 2 है, टर्म एक है तो मोनोमियल हो गया, पावर इसकी 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया। 7th पार्ट 7x क्यूब, इसमें टर्म एक है तो मोनोमियल हो गया, लेकिन इसकी पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो डिग्री के अकॉर्डिंग क्यूबिक हो गया, टर्म्स के अकॉर्डिंग मोनोमियल हो गया। सो दिस इज द completion of the exercise 2.1 of this chapter polynomial, which is a very easy exercise, and most of thing you have done in your lower classes also, degree of also done in your lower classes, and monomial, binomial, trinomial also you have done in your lower classes. So we'll discuss the next exercise in the next lecture. Until then, Jai Hind.